Sir Kusunji, can you please check on YouTube? We are live. Sorry. So we can go ahead, please. Yes. Thank you. Thank you. So we should start now. Yes, we should thank you, Meeta madam, and we can start. Yeah, thank you. So thank you. Thank you, team. Hello and namaste, everyone. I would like to extend very warm welcome to you all on behalf of Ministry of Education flagship program Unnat Bharat Abhiyan National Coordinating Institutes IIT Delhi. We have respected Professor Raj Kishore Patel from NIT Rourkela as a Unnat Bharat Abhiyan Regional Coordinator for Odisha State to moderate this webinar session. Namaskar, sir. Namaskar. We have our distinguished speakers from Odisha. They are Dr. Parikhita Bhoi, Sri Sanatan Maji, Dr. Jatin Nath Besra. Welcome, sir, and namaste you all. The participants who have joined through online platform, thank you for taking time to join us today. This is 16th webinar episode on understanding various modes of tribal development and protecting their indigenous culture from external influence. In earlier episodes, we have covered states of Northeast, South, West, and North India. Now, we have entered in east part of our country, starting from Odisha. You have got an opportunity to listen, understand the tribal development issue and challenges with three prominent speakers from Odisha. You can ask your questions at the end of the session. Now, over to you, Professor R. Kishore, sir, please. Good morning, one to all, especially to the IIT Delhi, Chandrabhushan Pandey, Ms. Neha and others, and Professor Vijay, who is leading the team. And because of his entire effort, actually this is possible. And we have already listened to many of the speakers of different regions. And today we are having this webinar where there will be three speakers. One is Sanatan Maji Murmu. He is a learned man, a banker, and currently he is the Bhans, actually the Disam Program Mandal chairman, and he has a vast experience about the village and village development. Then another speaker is Dr. Parikhit Bhoi. He is assistant professor, School of Odia in GM University. He also, because he himself has experienced the life of villages, so he can able to and travel, so he can enlighten us about the current status and how to overcome that and what are the challenges. And another, Dr. Jitendra Nath Besra, is assistant professor, actually the Department of Santal in MSCH University, Odisha. So I welcome you all, the speaker, and I hope you can deliver your lecture. And I request one thing, because it will be a time bound one. So try to finish within the stipulated period, so the interaction will be better. So the webinar participant can ask question where you can answer some of the question, so that it will be enrich the knowledge. And in that direction, with the guideline or guidance of IIT Delhi, Unnat Bharat Abhijan, we can able to implement some of the idea that will be discussed today. So thank you, and I request the smart speaker to deliver the today's lecture. Hello.
Yes, Professor Jatinnath, you start your lecture, please. Yes. Yes, sir, please. Okay. Professor Dr. Jatinnath, Jatindranath you are Mishra, not could you audible. please? Yeah. Yes, sir. Yes, yes, please, please. So good morning, everyone. Myself, Dr. Jatinnath Besra, Assistant Professor, Department of Santali, Maharaja Sri Ramchandra Bhandev University, हरिपादा। सबको फिर से मेरा जोहर। मैं आप लोगों को हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग वेरियस modes of travel developments and protecting their indigenous culture from external influence means आदिवासियों के विकास के विभिन्न तरीकों को समझना, अपनी देशी संस्कृति को बाहरी प्रभाव से रक्षा करना। इसके बारे में जो आज का हम लोग का है, तो उसमें मैं लिया हूँ संथाल कल्चर के बारे में, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो जिसे हम लोग जानते हैं, आदिवासी के ही एक जो ग्रुप है वो संथाल जनजाति हैं, ये संथाल आदिवासी हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि संथाल क्या है, संथाल कैसे बना, कि संथाली शब्द क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आदिवासी है क्या। आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर आदि और वासी से बना है। इसका अर्थ है आदिकाल से निवास करने वाले जाति। हमारे भारत देश में 2011 के जनगणना के अनुसार 705 आदिवासियों का उल्लेख मिलता है और पूरे भारत में 18.4 करोड़ के लगभग हैं। उड़ीसा में 62 प्रकार के आदिवासियां हैं। झारखंड राज्य में 32 प्रकार के आदिवासियां पाए जाते हैं। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग संथाल आदिवासी के बारे में जानेंगे। संथाल आदिवासी समुदाय के ही एक जाति हैं। संथाल झारखंड राज्य के एक प्रमुख जाति है। इसके अलावे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मध्य प्रदेश एवं त्रिपुरा राज्य पर बड़े पैमाने पर निवास करते हैं। इसके अलावे झारखंड देश के बाहर नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में रहते हैं। संथाल लोग की मातृभाषा संथाली है। संथाल लोग बड़े ही अच्छे, सरल, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। संथाल लोग मिलनसार होते हैं। संथालों में एक कहावत है, हौड़ खानगे पेड़ा। मतलब ये बहुत बड़ा चीज है कि हौड़ खानगे पेड़ा का मतलब होता है आज संथाल लोग या आदिवासी लोग जहां भी जाते हैं, वो अपने हिसाब से या तो चाचा मिलेंगे, या तो भाई मिलेंगे, या मामा मिलेंगे। ऐसे क्यों होता है? जैसे मान लिया मैं अभी बेसरा हूँ, जतिंद्रनाथ बेसरा हूँ। अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली में कोई ना कोई बेसरा अगर वहां होंगे, तो एज ग्रुप का अगर होंगे, वो मैं अपना भाई भाई मानूंगा। अगर थोड़ा अगर एज के होंगे, पापा के ये मतलब थोड़ा और दादाजी के वो हिसाब से, तो मैं उसी हिसाब से अपना संबंध जोड़ूंगा। तो यही है कि अगर संथाल लोग बाहर भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, अगर वहाँ के कोई संथाल मिल जाते हैं, तो अपना उसी से उस हिसाब से अपना संबंध बना लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं। अगर मान लिया वो जो मैं बेसरा हूँ, फिर वो मुर्मू कोई मिल गया, तो फिर उससे हौड़खन के पेड़ा मतलब वो मेहमान होता है, तो वो मुर्मू कैसे मेरा संबंधी या रिश्तेदार हो जाएंगे। मान लिया मेरे परिवार में या मेरा मामा घर है मुर्मू लोगों के घर में,
तो मैं उस हिसाब से उधर से ही वो रिश्ता मैं अपना मतलब संबंध बनाऊंगा। तो यही है कि संथाल लोग कहीं भी जाए तो अपना एक संबंध बना लेते हैं, तो वो अकेला कभी महसूस नहीं करते हैं, बाहर भी रहते हैं। अर्थात संथाल लोग जहां भी जाए वहां अपना रिश्तेदारी खोज निकालेगा ही। शायद इतने शांत होते हैं कि हाँ, अ, इसीलिए उनका नाम संथाल पड़ा होगा। चलो थोड़ा संथाल का नाम संथाल क्यों पड़ा जान लेते हैं। संथाल शब्द के नामकरण के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। अपनी अपनी सुविधा अनुसार संथाल शब्द की व्याख्या की है। बोर्डिंग को बोर्डिंग मत है कि यह शब्द सामंत भूमि के संथाली प्रतिरूप शांत या सात से बंगाल के सातेर तथा हिंदी में सामंतवाला के रूप में व्युत्पन्न होकर अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हुआ है। मनुस्मृति के निर्माण के पहले ही ऑस्ट्रिक लोग इस देश में रहते थे और इन्हीं संतराल या संताल कहा गया। बंगाल भाषा में संताल को संताल या सांताड़ कहा जाता है। स्क्रैप रूट के मतानुसार सांताल सांतार या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले सिल्दा परगना के क्षेत्र से लिया गया है। बंगाल के मिदनापुर जिला स्थित सिल्दा परगना के प्राचीन नाम सामंतभूम से हुई है, जो काल क्रम में सांताड़, सांतरूड या संथाल बना है। संथाल लोग एक समूह में रहना पसंद करते हैं। वे लोग गांव बसा कर रहते हैं। गांव का प्रमुख माझी होता है। उन्हीं की देखरेख में पूरा समाज के लोग रहते हैं। संथाल लोग अकेला कभी भी नहीं रह सकता या समाज के बाहर वह अपना जीवन बिता नहीं सकते। ऐसे कभी नहीं होता है। समाज के बिना जीना उसका जीवन जीना ही व्यर्थ है। संथाल की उत्पत्ति हिहिड़ी पिपड़ी नामक स्थान से हुई है। एक जगह का नाम था जो हिहिड़ी पिपड़ी। जैसे वहाँ एक लोकगीत से हम लोग को पता चलता है कि हिहिड़ी पिपड़ी रेबन जन्म लेन खोज कमान रेबन खोज लेन हारा रेबन हारा लेन संग बेड़ा। इसका अर्थ है कि हिहिड़ी पीढ़ी में संथाल लोगों का जन्म हुआ था। खोज कमान एक जगह है, वहां पर उन लोगों ने अपनों का परिचय खोजा, अपने को जाना। हराता रेबन हरालेन मीन्स हराता एक जगह है जो वहां उन लोग पले बड़े। और सासांग बेड़ा मतलब सासांग बेड़ा एक जगह वो भी जगह है, वहां उन लोग अपना जाति या टाइटल गत का विभाजन किए। ये जो चार जगह इन लोग यहाँ वहाँ, क्योंकि पहले तो ऐसा घर या गांव नहीं हुआ करता था, जंगल ही जंगल था, तो यहाँ कुछ दिन रहे वहाँ कुछ दिन रहे, तो इस हिसाब से ये चार जगह उन लोगों का निवास स्थान पाया जाता है। इनके आदि पूर्वज पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी थे। संथाल समाज में कुल 12 गोत्र या परिस को लोग पाए जाते हैं, जैसे मुर्मू, हांसदा, हेम्ब्रम, बेसरा, बास्के, सोरेन, टूडू, किस्कू, मांडी, पौरिये, चौड़े और बेदिया। जब इन्होंने पले बढ़े तो ऐसे चई चंपा बादोली कोयडा गाड़ में कोई सालों तक अपना जीवन बिताए। सभी गोत्र के लोगों के रहने के लिए अपना अपना गाड़ था, जैसे मुर्मू चंपागढ़, बेसरा दुग्धगढ़, टूडू सिमगढ़, सोरेन डुइसेगढ़, बास्के लोयंगगढ़, मर्डी बादोलीगढ़, किस्कू कोयडागढ़, हांसदा चहीगढ़, हेम्ब्रम खैरीगढ़, चौड़े जांगे कोदकगढ़, पौरिये पावरागढ़ और बेदिया सिंगगढ़। इतने ही नहीं, उस उस काल में कौन गोत्र के लोग क्या काम कर रहे थे, सबका अलग अलग काम था। जैसे मुर्मू लोग पूजा पाठ, किसको बुद्धिजीवी या प्रमुख जो थे, मंडी वो धनी थे। इसके बाद हेम्ब्रम जो चालाक चतुर उसको कहा जाता ऐसे है। बास के व्यापारी, सोरेन सिपाही जो सैनिकों का काम करते थे। और इसके बाद
टुडू बाजना बेसरा वो बजाते थे, बेसरा लोग ऐसे उन लोग का जो नाचने का काम होता था। ऐसे ही सबका अपना अपना कार्य था, अपने काम में निपुण थे। कोई किसी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इस काल में कोई भी किसी से झगड़ा नहीं करते थे, शांति से रह रहे थे। चंपागाड़ को ही संथालों के पूर्वजों का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में संथाल लोग का बहुत ही धनी एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस काल में संथाल लोग के पढ़ने लिखने का भी उल्लेख मिलता है। मतलब इस समय भी पहले जमाने में जो इन लोग रहा करते थे, उस समय की पढ़ाई लिखाई के बारे में जैसे वो भी लोकगीत के द्वारा पता चलता है। जैसे मुर्मू ठाकुर को दो बाबा पुथी को पढ़ावा, बादो लिखोंडा गाड़ते लिखोन गढ़न चला आम। इसका मतलब है कि मुर्मू जो ठाकुर उन लोगों को संबंधित का काम था, जो ठाकुर वो जो पूजा पाठ करते थे, तो उन लोग क्या कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे उस जमाने में। और वो जो लिखाई था वो और एक गाड़ और एक जगह जो बादोली नाम था, वहां वो लिखाई वहां पर वो पहुंच रहा था। मतलब इससे साफ पता चलता है कि पहले जमाने में भी कब मतलब कितने साल पहले कि आदमी वहां पर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे या था। इस गीत से साफ पता चलता है कि कभी किसी युग में संथाल लोगों का लिपि हुआ करता था, लेकिन कौन सी लिपि में लिखते थे, क्या क्या लिखे थे, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। कभी मुगल, कभी अंग्रेज, कभी आर्यों, ऐसे कितनों का शासन झेला है, तो पर भी आज तक अपनी संस्कृति को बचाए रखा। संथाल लोगों का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि संथाल लोग इस धरती के पहले मानव थे, जो इस धरती को बनते या बनाने का इतिहास मिलता है। धरती कैसी कैसी बनी, किसके द्वारा धरती का निर्माण हुआ, धरती दाएं से बाएं या बाएं से दाएं घूम रही है, इसका प्रमाण संथाल लोग के पूर्वजों को अच्छी तरह पता है। इनके अलावे अन्य लोग को तब तब पता चला जब गैलीलियो गैलीली ने 15 फरवरी 1564 में जन्म लिया और पढ़ लिख कर जब शोध किए, तब पता चला धरती एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इससे पहले संथालों के पूर्वजों को पता था। आइए देखते हैं। मतलब उससे पहले भी कि संथालों को पता था कि धरती मतलब राइट से लेफ्ट घूम रहा है या लेफ्ट से राइट घूम रहा है। तो इसका है कि ये जैसे यहाँ पर एक चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ जो एक ये जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो निर्माण के जैसे संथाली कथा अनुसार जो यहाँ पर कछुआ, आपका मगरमच्छ, विभिन्न जो जलीय जलीय जीव हैं, उन लोगों के द्वारा ये धरती का, ये पृथ्वी का निर्माण किया गया। जो इस संथालों का जो ये कर्म पर्व होता है, कर्म पूजा होता है, इसमें उन लोगों को यहाँ पर पूजा होने से पहले इन लोगों को बनाया जाता है और पूजा के सामने रखा जाता है। तो इसका ही एक उसका प्रमाण है जो आप देखने को वहां मिलता है कि धरती का निर्माण कैसे होता है। ये जो उसका एक यह संस्कृति है, जो वही पर्व होने के बाद पूजा खत्म होने के बाद शाम को इसके चारों तरफ ऐसे ये नाचा जाता है। ये है वो करम पर्व या गीत गीत नाच करते हैं, जो इससे आपका जो धरती कैसे बना, कि धरती का निर्माण कौन कितना पाया था, कौन नहीं सका, जो नहीं सका उसका क्या हुआ, जो सका वहां नीचे से ऊपर पानी उठाने मिट्टी उठाने में, तो उसका क्या हुआ। ये जो कारम नृत्य और गीत या बिनती जो मंत्र है, उसी से साफ पता चलता है। ये है। इसके बाद जैसे हम बोला था कि ये पूर्वजों संथाल के पूर्वजों को पता था, क्योंकि इन लोग सीधा प्राकृतिक से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे आप अगर देखेंगे कुछ पेड़ के लता या पेड़ पेड़ में जो वो ये लता जो घूम 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 के जो ऊपर तरफ जा रहा है, उसमें वो
अपने आप वो किसी के द्वारा मुड़ा हुआ नहीं है, जो जैसे है प्रकृति में वो लता वैसे ही वो ऊपर तरफ ये अपना जा रहा है, जो आज भी प्रकृति को इन लोग मानते हैं। और ये जो है ये राइट साइड में जो इधर है ये है आपका जो जाहिरगाड़ में जो ये जो सफेद से राउंड किया गया है, ये जो राउंड होता है पूजा से पहले जो उसका संस्कृति है कि कल्चर है, जो उसको बनाने के टाइम वो भी इधर से नहीं बनाते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज ही वो गोल गोल तीन बार वो घुमाएंगे। ये है। इसके बाद ये है आपका जो है कि ये प्राकृतिक से जुड़े हुए लोग, जैसे हम लोग अगर देखेंगे कि जो ये खेती है, जो किसान है वो ये भी जो है अपना एंटी क्लॉकवाइज ही वो अपना हल चला रहा है। तो इससे जो है कि इन लोगों से पता चलता है कि इन लोगों को पता था कि कौन है जो सही और कौन है जो उल्टा दिशा में घूम रहा है, इससे इन लोगों का प्रमाण मिलता है। इसके बाद है आपका और एक ये जो पूजा, जैसे संथाली में पूजा होता है, तो ये जो गवर जो लगाते हैं या लिखते हैं, तो वो भी है कि हम लोग जो ये लगाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज ही वो घुमाएंगे, इधर से वो नहीं घुमाएंगे। तो ऐसे ये उसका है। इसके बाद है आप अगर नाच भी देखेंगे संथाली लोगों के, ये ये भी आपका राइट तरफ ही घूमेंगे। ये संथाली लोगों का एक पूजा है जो माँ मोड़े बोलते हैं। ये बैसाख मास में पूजा किया जाता है। तो ये भी जो उन लोगों का राउंडिंग है, ये घूमने का जो प्रक्रिया है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही इन लोग नाच रहे हैं या घूम रहे हैं। तो ये इन लोगों का यहाँ से भी पता चलता है। और एक चीज यहाँ जो सामान्य घड़ी और आदिवासी घड़ी में क्या ये है कि इन लोग सब तो ऐसे करते हैं। फिर इसमें जैसे हम लोग एक देखेंगे यहाँ, जैसे ये आपका सामान्य घड़ी में हम लोग का यहाँ मतलब क्लॉकवाइज ये वाला घूम रहा है सामान्य घड़ी, और इधर का अगर आप देखिए लेफ्ट की तरफ घूम रहा है, जो कि आदिवासी संथाल समुदाय में जो पूजा होता है, नाच गीत होता है या जो भी होता है वो अपने हिसाब से ही उन लोग करते हैं। इसके बाद संथाल संस्कृति में और एक है जो खोदा और सीखा, ये आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा है। और ये आदमी संथाल लोगों के और बहुत ही कम जो मैंने अभी मतलब यहाँ वहाँ से मतलब कलेक्शन करके जो मैं लिया हूँ वो आपको दिखाऊंगा कि खोदा और सीख उसके दैनिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। संथाल लोगों की पहचान अगर आज भी बरकरार है तो वो है संस्कृति। आज वो कहीं भी अगर संथाल लोगों की पहचान है तो वो अपनी संस्कृति, परंपरा, आस्था और विश्वास के बदौलत। अगर ये कहें कि संथाल लोग संस्कृति में जन्म लेते हैं, संस्कृति में पले बढ़ते हैं, रहते हैं और संस्कृति में ही मर जाते हैं। संथाल ही क्यों, कोई भी जाति अगर अपनी संस्कृति को भूलता है तो समझ लेना आज नहीं तो कल उसका खत्म होना निश्चित है। संथाल आदिवासी समाज में पुरुष और स्त्रियों का एक श्रृंगार या अपने हाथ, पैर, छाती और गला में पौधा बनवाती है। संथाल समाज में पुरुष लोग अपने हाथ पर सिख बना बनवाते थे, लेकिन आज के युग में ये बहुत ही कम लोगों में देखने को मिल रहा है। ये जैसे है ये अगर ये हम लोग के जो संथाली दूसरा ये में भी है, आदिवासी लोगों में भी है। ये संथाली लोगों से मैं अपना कलेक्शन किया हूँ कि इन लोग जैसे ये पहले ये लोग अपना
ये कर रहे थे, मतलब हाथ में ये सब जैसे बनाए हैं। ये सब आजकल की मतलब मॉडर्न ये में ये सब खत्म होते जा रहा है। लेकिन अभी एक चीज आया इसके ये में, जो टेटू टेटू इन लोग करवा रहा है। लेकिन आज ये खोदा जो था वो उसका नाम लुप्त होते जा रहा है। तो ये जो संस्कृति है ये संथालों की काफी महत्वपूर्ण है, जो इस ये आप बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। इसको हम लोगों को बचा के रखना है। इसमें हम लोगों को भी वो खोज के या फिर वो इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री या लिख हम लोग ये सकते हैं। जैसे ये है कि संथाली ये औरतें जैसे ये हाथ में बनाए हैं, ये इस जगह पे बना, ये जो है। इसके बाद यहाँ ये जो पूरे हाथ में इधर ये इधर है, इन लोग अपना ये जो खोदा लड़कियों का ये सिख ये है पुरुष लोगों में। ये जो ये टीका के जैसे ये अपना बनाते थे, लेकिन आजकल ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। इसके बाद औलचिकी लिपि के आविष्कार, ये थोड़ा वहाँ थोड़ा सा मतलब वो ज्यादा नहीं है कि इसमें जो औलचिकी के निर्माण में जो पंडित रघुनाथ मुर्मू थे, इसमें काफी चीज वहाँ वहाँ पर है कि संथाली भाषा की जब अपनी लिपि नहीं थी तो संथाली भाषा साहित्य की चर्चा विभिन्न राज्य में रह रहे संथाल लोग अपनी साहित्य की चर्चा उस राज्य के भाषा लिपि लिपि से ही लिखना प्रारंभ किया था। जैसे झारखंड बिहार में देवनागरी, उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बांग्ला। लेकिन 1905 में जब पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म होता है और पढ़ने लिखने समझने में उनको काफी दिक्कतें होती है, तब वह मन ही मन में सोच रहा था हमारी भाषा में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, अपनी भाषा की लिपि क्यों नहीं है। तो फिर उसी दिन से गुरुओं को पंडित रघुनाथ मुर्मू लिपि की खोज करना प्रारंभ किए। 1925 में संथाल के औलचिकी नामक लिपि लोगों के सामने प्रस्तुत की, जो है ये जो आज ये इसी लेटर से ये अक्षर से आज किताब पढ़ाई जा रही है, आज किताब छप रही है। आज ये लैंग्वेज ये जो स्क्रिप्ट है ये यूनिकोड भी हो चुका है। तो आज विदेश में भी आपका यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई हो रहा है। जैसे ये है छापे के बड़े अक्षर, ये जो आप छापे के बड़े अक्षर दिख रहे हैं ये खाली किताब छपा जाता है इससे। और ये जो लिखने के छोटे अक्षर, ये जैसे एग्जाम में हुआ किसी को पत्र लिखना कोई भी चीज, ये छोटे अक्षर के लिए व्यवहार किया जाता है। और इसका एक लाइन मैं पढ़ दूं क्योंकि वो इसका जो उच्चारण होता है, जैसे ये जो ओ से इधर तक, ये जो फर्स्ट लाइन ऊपर से नीचे, ये हम लोग का स्वर वर्ण है। और यहाँ से ये जो और ये जो सेकंड लाइन से पूरा अंतिम तक ये आपका व्यंजन वर्ण है। तो ये इसका हम लोग पढ़ाई करते हैं ओ औत ओ अंग अल। इसके बाद आ आक आज आम औ ई इस इह इन ईर उ उच उद उण उई ए एड एड़ ओ ओट औ औ औ। तो इस ये मात्रा है टू द रेला का औ। तो ये है। इसमें आज इन्हीं लिपि से संथाली भाषा की पढ़ाई हमारे देश के अलावे नेपाल और बांग्लादेश उसी वक्त गुरु गोंके ने एक अलावे नेपाल देश में भी पढ़ाई हो रहा है। उसी वक्त गुरु गोंके ने गीत लिखा था कि वो मतलब जब लिपि का आविष्कार किए तो उस टाइम ही गुरुओं के ने एक जो गीत लिखा, ओल मेना तमा रोड मेना तमा धर्म मेना तमा आमहो मेनाम, ओल एम आद रे रोड एम आद ले रे धर्म एम आद ले रे आमहोम आदोआ। इसका मतलब है कि ओल मेना तमा मीन्स आपका लिखाई है, रोड मेना तम ओल मेना तमा है या लिपि है, रोड मेना तमा मतलब आपका भाषा है, धर्म मेना तमा मतलब आपका धर्म है। इसके बदौलत आप ऑल एम आद ले रहे, अगर आप लिखना या लिपि को भूल जाते हो, रोड एम आद ले रहे, अगर आप अपना भाषा को खो देते हो, धर्म एम आद ले रहे फिर धर्म खो देते हो, तो आप भी खो जाते हो। तो इसमें ऑल में ना तमा रोड में ना तमा इस ये बात तो गुरुओं के जी ने 1925 में
में बोला। लेकिन उससे पहले क्या हम लोग की लिखाई या भाषा या धर्म नहीं था। तो वही अभी हम लोग देखेंगे कि ऑल का मतलब और क्या इन्होंने डिफाइन किया है या बोला है। जैसे सोहराय में लिखना और धान या हुड़ू धावा, जैसे इधर हम लोग लिख रहे थे। ये जो सोहराय पर्व होता है, ये जो हाल फिलहाल दिवाली के बाद से शुरू होता है सोहराय पर्व, तो उसमें उनका जैसे 12 परिस या गोत्र है या टाइटल है, उन्हीं लोगों का ये जो लिखना अपना घर में विभिन्न प्रकार से अपना गोत्र के हिसाब से अपना लिख, मतलब अपना आंगन में ये चावल का जो आटा होता है उसी से इन लोग बनाता है। एक जैसा उन लोगों का जो लिखाई जो बनाना वैसे नहीं होता है। और ये जो आप इधर का धान का जो देख रहे हैं, ये भी पूरे 12 ये का टाइटल या गोत्र का अलग अलग होता है। जो ये जो धान का बनाया हुआ है धावा, इसको हम लोग संताली में बोलते हैं, ये अपने गाय या बैल के यहाँ माथे पर बंधाया जाता है उस पर्व में। तो ये है कि हाँ, तो है कि ये अलग अलग टाइटल में अलग अलग तरह से इसका बनाया जाता है और एक ही जैसा इन लोग नहीं बनाते हैं। क्योंकि वो जैसे मुर्मू का अलग हुआ, हांसदा का अलग हुआ, बेसरा का अलग हुआ, ये लिखना भी ये जो घर जो पर्व में होता है उसका भी होता अलग से होता है। और ये तो धान का जो बनाया हुआ है ये भी अलग अलग बनाया जाता है। इसके बाद आपका ये बैल में गोत्र चिन्ह या दाग, ये जो है यहाँ पर ये जो थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है, ये हेम्ब्रोम परिस या हेम्ब्रोम गोत्र के लोगों के गाय के चिन्ह को चिन्हित किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि आप अगर किसी के बैल या गाय को देखेंगे तो आपको चिन्ह से ही पता चल जाएगा कि ये किस गोत्र या किस टाइटल के वालों के ये गाय या बैल है। और इसका एक महत्वपूर्ण जो उल्लेख जो मिलता है, जो उलाउद्दीन खिजली जो अपने जो घड़ा और अपने सैनिक को भी वो इस तरह का वो चिन्ह लगाए थे। तो वो तो ये तो वो ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन उससे पहले उसी से पूर्व ही संथाली लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए आए थे कि क्योंकि ये देखने को मिलता है और अभी भी है। इसके बाद ये जो चिन्ह है, ये जो वहां पर जो गाय के ये में जो दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, यही है उसका चिन्ह जो हेमरोम लोग अपने गाय या बैल के ऊपर अपना चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद ये संथालों की संस्कृति का है एक जो पूजा है, कोई भी पूजा या पर्व होता है, उनमें जो चावल का जो बनता है एक हांडिया जो घर में, उसको जैसे हम लोग की कोई या मंदिर या कहीं बाहर या कोई भी अपने धर्म के हिसाब से जैसे हम लोग दूध 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 चढ़ाते हैं कोई पूजा में, तो संथाल लोग क्या करते हैं कि चावल का जो हांडिया बनता है उससे उन लोग ये पूजा, और ये अपने पूर्वजों के लिए क्या होता है जो इसको तांग हड़ी बोलते हैं। क्योंकि इसी से ही इन्हीं लोगों का एक होता है कि आपका एक जो जाति या धर्म के लोगों की पहचान होता है, अपने आस्था और विश्वास पर इन लोग होते हैं, टिके हुए हैं। जो ये है आपका सोहराय पर्व में ऐसे गाय और बैल को ये जो पूजा होता है, यहाँ पर कौन मतलब इन लोग एक साथ ये करके लाएंगे और ला के एक वहाँ अंडा या रख लेते हैं। तो वो अंडा किस गाय या बैल उसको पैर से लगा ऐसे या बैल भाग्य मतलब किस्मत वाला है, और उसी के मालिक जो होंगे वो भी वो किस्मत वाले माने जाते हैं उसी साल के लिए। और वो नेक्स्ट जो ये के लिए फिर एक साल के बाद वो अपना हिसाब से अपने गांव वालों को फिर वो थोड़ा उसी खुशी से वो उसको खिलाने या कुछ खाने के लिए देते हैं। इस तरह से उसका पूजा पाठ होता है। ये जैसे ये हो जाने इसके बाद वो सहरा पर्व शुरू होता है। जैसे ये बैल
ये वो जो जहाँ पर रखा हुआ था उसको सूंघा था या पैर से थोड़ा लग गया था, तो उसको ये तेल लगाए, और ये है उसका मालिक। तो ये उसका नाम बोल रहा है कि इसका ये है कि इस साल का ये आदमी होंगे। इसके बाद वो पूजा पाठ हो जाने के बाद है एक खुंटू पर्व। ये भी आजकल बहुत है, लेकिन कम जगह में देखने के लिए मिलता है। ये पूजा पाठ हो जाने के लिए ये बैल को भी अ, मतलब इसके साथ इन लोग खेलते हैं। ऐसे वो पुआल का एक बॉल टाइप का बांधते हैं, और ये अभी संथाली लोगों के गांव घर में चालू है, जोरदार हो रहा है। ये पर पूर्णिमा तक चलेगा इसी महीना में। तो ये है कि इस तरह ये पूजा पाठ हो जाने के बाद इन लोगों का ये एक परंपरा है, संस्कृति है, जो पर्व मनाते हैं। और पहले जमाने में संथाल लोग जब खाना बनाते थे, तो ये मिट्टी का ही चूल्हे और ये लकड़ी और ये मिट्टी का बर्तन में ही ये खाना बना रहे थे। ये भी मैं हाल फिलहाल में ये 2-3 दिन पहले ये इसका चित्र में लिया था, एक जगह गया था तो वहाँ ये मिल गया। तो ये भी आजकल बहुत देखने, लेकिन इसका जो खाना या जो भी बनता है, सब्जियां या मटन चिकन जो भी बहुत स्वादिष्ट होता है, बर्तन का उपयोग कर रहे हैं। ये संथाली गांव है जो इसी तरह इन लोग साफ सुथरा रखते हैं, और रास्ता हो या घर का आंगन हो, ये कितनों साल पहले ही उन लोग अपना एक गड्ढा बनाकर गांव गांव के पीछे, मतलब घर के पीछे साइड गड्ढा खोद कर वहां डालते थे, और वो जितना भी गंदा चीज या घास हुआ, जो भी हुआ, गोबर हुआ, उसी से उन लोग खाद बना के फिर वो जमीन पर डाल रहे थे। ये प्रोसेसिंग उन्होंने जब से जब से गांव बसा तब से ये प्रोसेस चल रहा है साफ सुथरा रखने के लिए। और एक व्यवस्था है उन लोगों का अपना, जो शासन व्यवस्था या माझी व्यवस्था, जो एक गांव अगर होता है तो उसको चलाने के लिए एक, मतलब जैसे हम लोग का कोई संगठन रहता है कि क्लब होता है, तो क्लब में प्रेसिडेंट होते हैं, आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वैसे बहुत होते हैं। तो संथाली गांव को चलाने के लिए भी माझी होता है, वही प्रमुख होता है, और माझी की देखरेख में ही सब चीज आपका जितना भी गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, किसी का बच्चा जन्म होता है, उसका संस्कृति उसका वो किस तरह से जो छठी होता है उसका किया जाए, कि झगड़ा हुआ तो उसका जो समाधान कैसे किया जाए, सब ये माझी के ऊपर डिपेंड करता है। जोग माझी उसका भाई है, जो माझी अगर नहीं रहता है तो ये भाई भाई माझी करते हैं या जोग माझी करते हैं। इसके बाद परानिक है, नायके जो है ये पूजा पाठ करते हैं गांव में, गांव के जितने भी देवी देवता होते हैं। और गौड़ेत जो है ये गांव में आपका जो कोई भी चीज बैठक होता है, कोई चीज होता है, तो ये गौड़ेत के द्वारा ही होता है। ये आपका मतलब होता है कि गांव का एक छोटा सा एक, जैसे हम लोग का अभी अगर संविधान के अनुसार अगर देखेंगे, तो अभी जैसे हुआ हम लोग का संविधान के अनुसार ये चलता है, हमारा देश चल रहा है। तो हम लोग भी यहाँ मतलब संतालियन लोग का अभी भी है वो अपना स्वशासन था, वो माझी के देख रेख में ही होता है। अभी भी वो व्यवस्था है जो आपका नीचे जैसे उस टाइम था पीड़, आजकल पीड़ खत्म हो गया, तरफ था, तरफ भी खत्म होते जा रहा है। वो खाली ये अभी वो ये सब चीज को ये करके अभी हम लोग के कानून के अनुसार या संविधान के अनुसार अभी पंचायत में वो आ गया। जैसे हम लोग अगर रह रहे हैं तो पांचों अनुसूचित क्षेत्र जो पैसा अधिनियम ये आता है, उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में लागू है। और ये है कि जैसे आज जो है, जो संथाली लोगों का मतलब है, जो अपना एक स्वशासन व्यवस्था है, उसमें जो कुछ दिन पहले जैसे 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा सरकार से को कलाहंडी और रायगढ़ जिले में बॉक्साइट खनन के लिए ग्राम सभा में अनुमति अनुमति लेने को कहा था। जैसे अपना एक जो व्यवस्था है,
जब वो कंपनी वहां पर अपना बॉक्साइट की खदान खोलने वाला था, तो वो सीधा मना कर दिया था कि आप पहले उसका ग्राम सभा कीजिए, वहां के मुखिया को, मतलब मुखिया जो मुख्य है उसको, उससे परमिशन लाइए, तब जाके आपका ये आप कंपनी यहाँ लगा सकते हो। तो उस टाइम वो स्थानीय लोगों से पूछा गया था कि बॉक्साइट के खनन से क्या उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार को नुकसान होगा। तो ये उस टाइम वो पूछा गया था। और इससे है कि जितने भी आदिवासी या कहीं भी आदिवासी एरिया हो या मतलब शेड्यूल एरिया हो या ना हो, लेकिन कहीं भी अगर आपका कोई भी प्लांट या माइंस बनता है, तो वहाँ की कोई भी जाति का हो, संस्कृति हो या धार्मिक हो, वहाँ का कल्चर तो नष्ट होता ही है। देखिए, अगर आज ज्यादातर ये देखा जाए तो शेड्यूल एरिया में ही ज्यादा आजकल ये बन रहा है कि आपका प्लांट बन रहा है कि ये, लेकिन आज उन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। तो फर्स्ट तो उन क्या हो जाते हैं कि जितना अपना वहां पर कल्चर था या धार्मिक की जो पूजा पाठ जो जगह था, उन लोगों से उसको हटाया जा रहा है। तो आज जो वो आदमी एक गांव बना कर उन लोग थे, तो उसमें से क्या हो रहा है, वो गांव आज बिखर रहा है। बिखर बिखर करके क्या हो रहा है कि वो जो संस्कृति है, वो जैसे उन लोग और कभी एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो अपना जो संस्कृत है, वहां पर जो संस्कृति है, वो उन लोग वहां से हट जा रहे हैं। और धार्मिक जो परंपरा है, जैसे उसका जाहिर स्थान जो हम लोग का पूर्व का जो स्थान है, वो भी उसको फिर बाद में कौन उसके लिए जमीन देगा, जो वहां दूसरा जगह जाके अपने को एक धार्मिक स्थान की पूजा पाठ का जो जाहिर स्थान जो होता है, वहां वो देगा नहीं ना कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्लांट नहीं खोलना चाहिए, कि अभी ये नहीं वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब बनने के लिए अगर एक जगह से कोई आदिवासी या कोई भी जाति को हटा मतलब वहां से माइग्रेट होना पड़ रहा है, तो फिर उसको सोचना चाहिए कि इन लोगों के लिए एक अच्छा से गांव बसाया जाए। वहां पर उसका जो आवश्यकता, उसका जो जितने भी है, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, उसका धार्मिक जगह हुआ, जो संस्कृति था, वो खत्म न हो जाए। तो उस सोच के से हम लोगों को वो आगे या डेवलपमेंट की बात करना चाहिए या सोचना चाहिए। इसके बाद ये होता है कि ये भी एक संस्कृति का पार्ट है। जैसे एक छोटा बच्चा जो जन्म जैसे ले लेता है, तो वो जब सोते हैं Hello, तो उसके hello, सामने hello. I am सर just excuse me. सर Actually, there are two more speaker, and within the ओके stipulated time, actually they will be also telling, they will be ओके presenting there. So another 2 minutes, you please conclude. ओके Sorry for interruption, but what to do because we are all time bound. So please, another 2 minutes, you please complete. ओके। तो ठीक है सर, ये और ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो ये है एक गीत, नृत्य और गीत है जो साड़पा बोलते हैं इसको। ये इसी महीना ही नृत्य किया जाता है। ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा नाचा जाता है। ये इसको साड़पा हम लोग बोलते हैं। इसके बाद है आपका ये दासाएं। ये दुर्गा पूजा तो नहीं समझ, ये जो दासाएं बोंगा जो हम लोग महीना बोलते हैं, उसी टाइम ये नृत्य और गीत होता है। इसका भी है लेकिन अभी टाइम नहीं है। इसके बाद ये पुष महीना जो जनवरी में ये गीत होता है, नृत्य होता है, इसको बूढ़ी गानी बोलते हैं। और अ, ये होता है फागुन महीना जो मार्च फरवरी और मार्च के बीच में होता है। बहा नृत्य, ये फूल से संबंधित, नया पत्ता फूल से संबंधित है, जो उसमें ये पर्व होता है। और इसका बहुत ही बड़ा ये प्रत्येक अपने घर पहुंचने तक वो उसका पैर धो धो के वो मतलब इन लोग गांव के स्त्री लोग उसका पैर धोते हैं। इसके बाद अगर संरक्षण की उपाय मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो आदिवासी कल्चर में आज बहुत से ऐसे चीज है जो वहाँ मतलब लाना चाहिए हम लोगों को आगे लिख कर या उसका वीडियोग्राफी कर, किसी भी तरह से पुरानी जो चीज है, तो उसे है कि आदिवासी संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना और आदिवासी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव, इसमें दोनों आदिवासी लोगों को भी होना चाहिए और अन्य अन्य लोगों को भी।
इसके बाद है कि आदिवासी संस्कृति को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना। जो आज अभी तक जितने भी पढ़ाई या लिखाई हुआ है, वो अपने दूसरे भाषा या दूसरे पद्धति से वो अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं। इसीलिए जो है कि आज आदिवासी अपना महापर्व कैसे क्यों मनाते हैं, कर्म क्यों मनाते हैं, ये जो पैर क्यों धोया जाता है, इसे बहुत चीज है जो उन लोग भूलते जा रहे हैं। इसका भी मुख्य कारण है आदिवासी भाषा, साहित्य और संस्कृति खुद की भाषा में पढ़ाना। और ये है कि सरकार को या हम लोग के द्वारा अगर ये संभव हो सके तो आदिवासी लोग, जैसे ये अगर मैं अपने भाषा में बोलता या हो सकता तो और इससे कितने अच्छे से हो सकता था। और मतलब अगर वो पॉसिबल होता, लेकिन वो संभव नहीं है, तो मैं जो इमोशन या एक्सप्रेशन वहां देना मतलब दे पाता, वो नहीं कर पाया। तो आदिवासियों के विकास एवं संरक्षण के लिए जितने भी कानून और कानूनी हैं या एक्ट जो बना है, उसको कड़ाई से लागू करना। तो आज तक जितने भी है कि जो कानून है कि परंपरा जो है, वो सब जैसे आपका सीएनटी एक्ट हुआ, वो इन लोगों की जमीन को रक्षा करने के लिए, पैसा जो हुआ कि उसका गांव में जो उसका रूढ़िवादी या स्वशासन जो प्रणाली है वो खत्म न हो जाए, उसके बारे में ज्ञान देना। लेकिन आजकल जितने भी मतलब मारपीट और ये होता है, सीधा हम लोग का कोर्ट कचहरी में पहुंच जा रहा है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। सब ये जितना भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी चीज होता था, तब वो माझी ही वो अपना सब चीज और रफा दफा कर रहे थे। तो ऐसे ही था, है, और उसी को कैसे हम लोग अपने न्यू पीढ़ी या न्यू जनरेशन में लाएं, वही मेरा भी सोच और कर्तव्य है कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो यहाँ बहुत से हम लोग के पास काम है और काम कर सकते हैं। और सबको इसके साथ मैं अपना जोहार और मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जोहार। Thank you, Jatindranath Besra. Actually, your presentation has enlightened me as well as to others, and I hope your presentation will definitely make the people aware about the Santal and their culture and how to restore the culture and in today's life or generation. सर। So there may be some few questions, and because the next speaker is already ready, so at the end of the session we'll be discussing. So I request the audience or the participant to keep their question. So one or two question we can take for Dr. Jatindranath Besra. So once again I thank Dr. Besra for a सर, nice and beautiful presentation. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। The next speaker as per the program is Mr. Santan Maji Murmu. He was a manager in State Bank of India, and after his retirement, now he is the chairman or president of Bhanj Disam Program Mandal, working for the welfare and restoration of the culture of tribal people in villages. So I request Mr. Maji to present his presentation for today's webinar. Thank And you. again, I will request Mr. Maji to actually keep the timing in mind. So your time is 30 minutes. So we can extend by few minutes, but we should actually complete so that we can make a discussion on the topic that you will be presenting. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, Mr. Maji, yeah. Respected Professor Virendra K. Vijay, National Coordinator, Chakraborson ji, Unnat Bharat Abhijan, Cell Indian Institute of Technology, Delhi. Respected Professor Rajkishore,
RCI coordinator of National Institute of Technology, Raulkela, Odisha. Respected guest speaker, Dr. Jatindranath Besra of Maharaja Sri Ramchandra Bhanj University, Odisha. Respected guest speaker, Dr. Parikshit Bhoi of Gangadhar Meher University, Odisha. Thanks to Ministry of Education, Government of India for giving me this privilege to present ground realities experiencing by the tribal groups of my district and adjoining tribal areas of West Bengal and Jharkhand. Let me start. I am belong to Mayurbhanj district of Odisha state. It is situated at the northern part of Odisha, bounded in the northeast by Medinapur district of West Bengal and Singhbhum district of Jharkhand. It is 309 km from Bhubaneswar, the state capital of Odisha, 100 km from Tatanagar, Jamshedpur, and 250 km from Kolkata. It is at present the biggest district of Odisha. Total area is 10,418 square kilometer, and 39% of total geographical area, that is 4,049 square kilometer, is covered with forest and mountains. The district consists of 4 number of subdivisions with 26 numbers of blocks, 404 gram panchayats, and 3,966 villages. Total population is, as per 2011 census, is 25 lakhs. Literacy rate is 54.35%. ST population is 58.72%. It is coming under 5th schedule area. Then the average rainfall is 1,648 mm per annum, hot summer and chilly, with good precipitations, endowed with lush green vegetation, different fauna, and rich tribal culture heritage. This district has rich mineral base and is home to Similipal Biosphere, expansive national park with wildlife sanctuaries. It is a treasure of forest. 52 types of tribals residing in my district out of 62 types of tribal of Odisha. 14 numbers of river irrigation projects are there in my district, which displaced nearly 70 numbers of tribal villages. The Similipal National Park and the Tiber project displayed nearly 90 numbers of tribal villages. Then background of tribal society. Tribal community in India are deep rooted with nature, indigenous livelihood, traditions, folk culture, and are mostly confined to their own people. Before colonial rule in India, tribal had been living peacefully in their regions in harmony with nature. Traditionally, they enjoyed total autonomy over governance of their affairs. This system of autonomy was dismantled during British Raj, and various legislations was brought to alienate them from their ancestral rights. They introduced many changes in their way of life. Many of the tribal groups revolted against the forceful instructions by the British in their region in 19th and 20th century. The cause of tribal revolts was mainly the introductions of the jamidari and feudal systems. The jamidars becomes owner overnight. As a result, tribals lost their land and reduced to landless agriculture laborers. British introduced the traders and moneylenders in the tribal area, and this led to severe exploitations of local tribals by outsiders. Then Christian missionaries interfere with traditional customs and religion of the tribal people. Then fourthly, the British government established its monopoly over forest land through the Government Forest Act 1865, Indian Forest Act 1878 and 1927, which deprived tribals to enter forest for meeting their day-to-day needs and badly affected their livelihood. During the British Raj, the tribals suffered physically, mentally, intellectually, socially, and emotionally, and we are morally depressed. After independence of India, the trend of exploitations on tribal continued. The government, unable to read the minds of the tribal, their plight, their need,
and their demand. The government break down tribal populated areas and merge them in different adjoining states and destabilized their culture and traditions, way of life in the name of reorganization of state in linguistic basis. For example, tribal areas of Chotnagpur Plateau is divided and distributed among Bengal, Bihar, and Odisha state. The tribals of these regions were severely affected politically and socially. Then, displacement of tribal from ancestral habitat and land for mining, river project, industry, and forest conservations. Displacement due to illegal transfer of land of tribals to non-tribals. Then loss of livelihood and unemployment forced them to leave their village and migrated to other parts of the country for survival. According to recent UNDP, 80% of poor in India live in rural areas. The poor, mainly tribals, were deprived of schools and housing. Nutritional deprivation is rampant and 60% of people experiencing it. The Forest Right Act, FRA, 2006, which recognizes the rights of the forest-dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to forest resources on which these communities were dependent for varieties of needs, including livelihood, habitations, and other socio-cultural needs. FRA is not truly implemented by the state government. PESA Act 1996. The provision of the Panchayat Extension to Scheduled Area Act 1996 or PESA is a law enacted by the Government of India for ensuring self-governance through traditional Gram Sabha for people living in the scheduled area of India. It is also not implemented by the state government. Achha, rampant negligence on FRA and PESA acts by both central and state governments not only badly affected the tribal but also lead to destructions of forest at fast rate. Forest is the life of tribals. Any negligence on tribals is counterproductive and lead our nations to face flood, drought, famine, and breakout of unidentified diseases like corona in future. Understanding various modes of tribal development. Some central government scheme for tribal education is available in my district. Pre-matric scholarship scheme is extended to tribal students in my districts. Post-matric scholarship scheme is benefiting tribal students. Special emphasis is given to girls' education. Adequate special tribal hostels for both boys and girls were established and are functioning only for pre-matric educations. A few post-matric hostel is available in my district. It needs to be established in all government colleges. Scholarship for higher education is extended to our state for ST students. National scholarship for ST students for studying abroad is totally unknown to tribal students and is not available. Scholarship is not paid in time and causing lot of hardship to the poor ST students. There is need for a center for information and hand-holding for imparting awareness about education and employment for tribal students in all district headquarters. Then economic empowerment. Some central government scheme is available and are in operation. Self-help group. It is functioning in almost in all villages in my district. Then Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is functioning in my district also. Regular coaching scheme for banking, secretarial services, and computer course is not available in my district for tribal students. Regular
military training for ST, scheduled tribe, is also not available. Facilities for upgradations of merit of ST student is also not available in my district. Then TribeHead, the Tribal Cooperative Marketing Development Federation, has very limited scope in my district. There is no such tribal product available for marketing. There is a need for training institute for development of rural artisans in various products. The forest minor products is also not marketed by TribeFed. There is a need for intense development plan for PVTG that is particularly vulnerable tribal groups as their population is decreasing day by day due to loss of livelihood, malnutrition, lack of housing, and disease. So protecting their indigenous culture from external influences. Some points. There is no specific scheme of government is implemented for protecting indigenous culture from external influences. The protections of tribal language is the need of the hour to preserve culture of tribal group. The government is doing nothing in this area. Tribal language teacher should be appointed in schools and colleges to promote language and culture. Impart of primary education through tribal language is necessary. There is no monetary help to extended by the government to improve or maintenance of place of worships of tribal groups. No allowance is paid to the tribal priest, tribal village head, and its associates in the village to protect religious place of worship and tribal way of village administration. No tribal cultural center exclusively established for tribal group by the government in my district. For protections of indigenous culture from external influences, both isolation and integration approach should be followed. Change of faith is the main cause of erosion of indigenous tribes culture. Hence, religious conversion in tribal areas should be discouraged. Tribal livelihood and environment. Tribals of my district not only use the forest as resources for fulfilling their basic needs, but they also use it as means of livelihood. They collect nature's product such as dry and fallen woods for fuel, some timber and bamboos for construction of house, nuts, berries, bones, hides, skins, carps, broom grass, mango, mahua, and mushroom, etc. as a source of income. There is a symbiotics relationship between tribals and forest. The relationship between tribals and forest is inseparable, coexist together in a way that benefit each other. That relationship can be maintained by allowing tribals to live peacefully in designated forest areas without interference. Forests are the basic support system for tribals. They provide them employment through harvesting of forest, raising plantations, collections, and processing forest product. Now, the government restricted people's rights over their forest, which affected
the livelihood. For centuries, Indian tribes have helped preserve natural habitats and promote conservation through sustainable practices in farming, fishing, and cohabiting species with wildlife. Their rights, their rituals, and belief further contribute to environmental protection. Villages inside forest have resulted in grassland formation, serving as grazing plots for herbivores, while in turn enable carnivorous population to maintain food cycle. Therefore, Indian Forest Act should be amended to accommodate and assign tribes to maintain the ecosystems as well as livelihood. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you, Mr. Majhi. And actually, your presentation was so nice that you have given the culture and all that, and how it is being destroyed, or how the outside interference by Britishers has entered to that and trying to disrupt it. But because of the strong cultural heritage, you can say, it is being maintained by the tribals till today. And whatever problem is there, you have also given the solution. If these are the problem, then these are the solution. So it can be implemented, then definitely the culture, the everything of the tribals in villages can be restored, which will help for their growth, for the growth of the state, for the growth of the country. So thank you, Mr. Majhi, for your enlightenment. Actually, I belongs to a village where 95% of the people are actually tribal. So I have the experience how the interaction between the villagers and nature is there, and all the time whatever interaction is there, it is in the positive direction. So thank you once again, Mr. Majhi, for Thank you, your sir. enlightened talk. And not only the today's participant, because it is will be in the YouTube. There are hundreds, thousands of people will be looking after that, and I hope by this we can enlighten, or we can actually make them aware of their right, that this can be done, so that the culture and tradition of the tribals can be restored. Thank you. Thank you, sir. And as per the program, the last speaker of this today's webinar is Dr. Parikshit Bhoi, Assistant Professor, School of Odia, GM University, Sambalpur. So I request Dr. Bhoi to present his presentation for today's webinar. And again, as usual, I request to keep the time in mind, 30 minutes, so that after the presentation, we can have a little bit of discussion on the topic that both the speaker has presented, and after your presentation, we can make a discussion. Thank you. So, Mr. Dr. Bhoi to present. Thank you to chance this platform. Namaste to all of you. Sir, today I'm very happy to say some things about our culture, indigenous culture, and indigenous technology, and all sorts of things. My research is my research finding area or finding subject on the specifically Odisha districts, namely Kalahandi, Koraput, Rayagada, and Malkanagiri. This tribal group, which Pandha tribes and Juanga tribes, all
some stripes there, and all tribal problems and what I findings in my books chapter, that only I here present. So before my talking, two speaker already mentioned about the Odisha tribal population, and what's the tribal, the primitive tribal 1362, the Odishan tribal, and recently 2020, my one teacher, Hyderabad University, he mentioned one in Odisha, there found one tribal also, and the tribal group, limited people up there, 20 people are there, and he told that their language also different from the other 62 groups of tribal. So now, overall, the Kalandir, Koraput, Raigala, and Malkanagiri, I say definitely some problems and how to how to promote the culture. My point of view that influence, how to we check the external influence. We cannot check, nobody can check the external influence. We can promote, we can extend the culture and the indigenous knowledge. So it is not protect. If the protect, then our tribal culture and knowledge will be very limited, come to be limited. So we should to live in our society and in our country to not remove to our culture. So it is very good step for Indian government and as well our people also. So really development of tribal population in our country is constitutional obligation of the states. But in the reality, the tribal people are facing a lot of problems like poverty, poor literacy, or now my recent speaker mentioned all these things, and deprivation from the natural resources. According broad sense of Indian society, the Indian community's presence give importance to social status to Indian society. They are considered as original inhabitants of India, uh, who carry forward a legacy and rich in distinct culture dates for many decades. Yes, we know about all this culture. All people know about their culture and traditions. Different tribal groups have different culture and lifestyle, different environmental conditions from one to another. By the language, as I am the professor of language, that's why I'm divided into basically three categories, which named Austroasiatic, Dravidian, and Indo-Dravidian. That's the major population of the Kondhe tribe is 11.4% in Odisha, and least populated tribal is Ho tribe, 0.50, according to my research. That the Som tribal groups missing since 25 years. It is happening due to some issues, and I hear that issues. What may be that issue? I mentioned some issues here. Displacement. First is displacement. Second is inhabitants of non-settlement of land. High chemical instrumental implications, education, language, or evidence complexity. So before my taking, I say about my professor. Language is the very vital for their culture. Remove from here. So here I try to explain that tribal society bring their distinct cultures, sense of traditions, logical values. It gives a vital important to our indigenous and civilization. From we know that our oldest culture is tribal culture.
They have been fighting for their customs, natural resources, and lots of things. As we know that tribal communities in different part of our countries have mentioned their maintained their cultural identities and by the virtue of their distinctive racial traits, language, habits, environmental lifestyles, as well as customs, traditions, and economical development in tribal societies. So now we know all these things, to culture, tradition, all these things, but I present here on the different way with the people, NGO, and government policy further emphasize the need for exploration, documentation, useful tribal customs, traditions, and development before the become absolute and lost in antiquity, succumbing to the onslaught by the force of modernization. तो हम कभी कभी वो ट्राइबल को पीछे छोड़ के ट्राइबल को पिछड़ जाती समझ के हम क्या करते हैं, जो पहले से हम कुछ मॉडर्नाइजेशन उसके ऊपर दबाव डाल देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इट इज द गुड वे फॉर लिविंग स्टाइल्स, स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल्स. फॉर एग्जांपल वी कैन से कभी मिट्टी में पहले बोल रहे थे, मिट्टी में वो जो मटकी में तैयारी करना, चावल तैयारी करना या सब्जी तैयारी करना, इट इज कॉल्ड द आवर ओल्डेस्ट कल्चर. But we force to them, the tribal we force to them, it is not your culture. You come to forward, you come to forward and you learn some pesticides life. So administration and development of the intervention and preserve as well as promote value of our tribal communities for the prosperity of mankind. It is fact that tribal people know utilization and conservation for their existing circumstances. We have destroyed their valuable thought, ideology, good survival life instead of the name modernizing implication. Actually, government and people should encourage tribal act and introduce the suitable new methods. इसी के तहत जो इम्प्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है अभी, क्या न्यू मेथड बोलने से वो अपनी खेती का उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो ये न्यू मेथड नहीं है which is suitable for the tribal people. That's only use and that's only to make the laws and new methods. Social customs and uses, conversion folk ways and folk mores, norms, ethos, value and ideology play their roles as actors in the social system, not only in that defining the social identities of the society to which they belong, but also transmitting them to further generation. Then indigenous culture become absolute and new one emerge for that number of development activities intended for protecting the socio-economic and indigenous culture from the exploitations meant for helping them to further their socio-economic and cultural development did not yield expected result. Before independence, try and teach our tribal cultures, and government also after independence, government also takes some steps, but that is not continue till date. Only 1964 it is applicable for purchase the goods and to help to tribal economy. So it should be continued. We should try to enhance the tribal weaving, loam, food gathering, / shifting cultivation. Main focus cultivation is shifting cultivation. उसके तहत जो पहाड़ी इलाका में 3 तरफ के विभाजित किए गए हैं. जो पहला ऊपर में
टप के जो लैंड होते हैं और बीच के लैंड होते हैं, नीचे का सबसे नीचे का जो गांव के तरह वो रहते हैं। तो तीन तरफ के जो खेती है, तीन तरफ की खेती भिन्न भिन्न प्रकार की वो फसल वो लेते हैं, फसल करते हैं उससे। तो उसको हम समझना जरूरी है कि उसका फसल किसी तरह का है। We cannot compel to them to use the high intensity of pesticides. Like the particular tribal group enrich the culture heritage states by their culture diversities. The rich folk traditions, songs, dance, music, rituals, and festivals celebrated around the year add colorful dimension of their existence, always as cultural main nature spirit complex. Main nature spirit complex. This is is the status of our culture, Indian culture, that gives meaning and depth to their lives too, and our social structure. They traditionally believe in supernaturality. We know, and all the people all the people say now also say it is the this belief. It's a blind, but it is fact that I found my research that that is not the blended that the culture, not to the their belief is supernatural. Our in our indigenous culture, for our indigenous culture. So it is fact that, for example, लेते हैं हम जो गाय का गोबर लेते हैं, वो चीज का पहले इस्तेमाल किए थे वो आदिवासी के ट्राइब, यहाँ जो मूल निवासी है, उसको कैसे तरीके से यूज करना, कैसे पूजे में कोई पूजा हो जाए तो कैसे यूज करना, उससे पहले यूज करते थे ट्राइबल लोग। और बेसिकली यूज इन द द्रविडियन ट्राइबल, जो द्रविडियन गोष्ठी के होते हैं, कंद होते हैं, पर्चा होते हैं, या कंद का वेराइटीज है, वो डोंगरिया कंद है, वो इसी तरह हमारा जो रिसर्चर है 3 टाइप का रिसर्च पाए हैं, लेकिन मैं 7 प्रकार का टाइप वो मिला है मुझे, तो वो अलग सा बात है। तो मुझे आज इंडिजिनस के जो तहत बोलना है, तो their traditional belief in the supernatural which control human existence in the world is to be observed, documented, need research, which linguistic day by day. It is the good for said to our Indian culture. Indigenous culture is now in search for blending of traditional technology with more idea to make more comfortable and well, and the shape the generation as whole, and particularly among tribal communities from degradations. It is believed that our traditional tribal wisdom of much value, and now also can deliver effective results also. It is so in case of tribal art, craft, culture, other life supporting systems need her to develop and to enrich their culture. So I there found 3 reasons. It may be, I believe in 3 reasons. That one is indigenous technology, technical knowledge. Second is goods production. Third is religious aspect. First one is indigenous technology or knowledge of the tribal artisans cover a wide range of their expertise in wall painting, web bamboo making items, necklace, beads and stands, jewelry, musical instruments, all the things, embroidery, so all these things efforts. तो we क्या होता है, इसी को हम जो बाजार के तरफ से लेते हैं, तो खुद ट्राइबल लोग क्या करते हैं, वो कभी बाजार नहीं आते। Actually, what the problem up there,
the economical, why the economically is very less than other people, the tribal people. तो वो क्या करते हैं कि कभी भी वो मार्केट को नहीं आते हैं, वो जो उनके पास जाता है उसको बेच देते हैं। तो क्या होता है, तो वो जो हिसाब से पैसा लेना है उसके हिसाब से ज्यादा कम लेते हैं, और जो हमारे मार्केट को जो आता है उसके हिसाब से कई गुना बढ़ जाता है। तो यह है उनका इकोनॉमिकली, actually economically conditions that folklore, folk tales, religions, myths, and songs can also provide much information about indigenous technology, technical knowledge. The traditional looms used by the travel is the size adapted to the modest scrap cloth, which are to be used is simplest and indigenous primitive loom. This weaving natures Kerenga people applying vegetables, it is natural, and they collect some trees, collected from the some trees, their color. Basically, tribal people have used by their experience like embroidery practice by this primitive tribal group sustainable. Second, that goods production, how their good production is available and how do they earn money. The important source of livelihood of tribal people are agriculture and horticulture, forest collection, trade, animal husbandry. The land of tribal region is divided into three categories. Just I mentioned before, the top hills, middle, and the lower adjacent the hamlets are called birds. And middle hills of Bengal, जो खेती करते हैं, तीनों तरफ की खेती करते हैं, और in view of the tribal mostly processed the top hills and foot of the hills. Basically, all these places are cultivated like various creepers, pulses, green leaves, all sorts of things. This economically based cultivation is the only way of their survival. Out of varieties, liquor is also a source of earning. For example, लेते हैं जो रिसर्च से पाया गया है, एक सलब बोलते हैं, सलब के पेड़ होता है, सलब के पेड़ जिसके पास होता है वो उनमें से क्या बोलते हैं, वो धनीशाली व्यक्ति कहलाते हैं, और कभी कभी उनके बीच वो पेड़ के लिए भी झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये इसी की वजह से जो इकोनॉमिकली जो साउंड चाहते हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़ा साउंड होना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, जो पेट में बाहर निकलता है 6 महीना, उसका रस, उसका जो लिक्विड निकलता है, उसको बेच के भी कभी उनका एक परिवार भी वो भरण पोषण कर सकते हैं, उसका जो फैमिली का देख रेख कर सकते हैं। तो एक पेड़ है, और दूसरा पेड़ है वो उनका जो क्या बोलते हैं, वो चावल जो आप उड़ीसा में प्रचलित है एक चावल, वो नहीं, जो हांडिया बोलते हैं वो नहीं, और अलग से जो ट्राइब कलाहांडी, रायगढ़, कोरापुट में यूज करते हैं, ये अलग से है। मैं हर उड़ीसा के सभी आदिवासी एरिया को गया हूँ, तो अलग तरह का है। तो उनमें से भी उसका मनी डिपेंड करता है, उन साउंड है। तो इसको भी हम कुछ कहना है, कुछ आगे लेना है, वो नेचुरल कैसे, कोई आर्टिफिशियल कोई नहीं मिला है वो। The tribal goods either supply the market, not sell at a good price. But we that found that these goods are costly in the market. Very often, tribal exchange their goods for other goods, which less valuable than their goods. अभी तक भी ये रहा है, अभी तक भी एक चीज जो अदल बदल से हम कुछ खरीद लें, कुछ दे दें, कभी
हो जाता है, इसी के हिसाब से उनका जो लेबर होता है उनके हिसाब से कम पैसा वो निकालते हैं। दिस बीइंग्स एक्सप्लॉयटेशन फिजिकली, मेंटली and financially. The tribal people are exploited by the local vendors. ये करते हैं जो exploit करते हैं वो local vendors, so-called local vendors and businessmen and जो लाते हैं आदिवासियों के जो जंगल के ऊपर जाके कमल विलेज को लाते हैं, मार्केट को लाते हैं, वो लोग है लोकल वेंडर्स और बिजनेसमैन। तो इसी के हिसाब से the tribal people are taxed by the local vendors and businessmen foods to overcome this hazardous conditions. Government should arrange the bonding. शब्द इसीलिए मैं यूज करता हूँ जो धान के जो खरीदने के लिए वो व्यवस्था है, उसी की तरफ उनका जो गुड्स है उस आदिवासी का गुड्स है, कलेक्शन है जंगल का, इसी को कलेक्ट करके सरकारी के तरफ से कुछ मार्केट में स्पेशल व्यवस्था रहना चाहिए जिसके तहत वो सीधे तौर पर लाभ उठा सके ट्राइबल लोग। Their indigenous culture can be spread every corner of India. ये मेरा विश्वास मैं मानता हूँ कि जब डायरेक्ट आते हैं तो ज्यादा लोग खरीद लेते हैं वो ट्राइबल चीज बोल के, और उनका हिसाब से उनका जो कल्चर है, उनका टेक्नोलॉजी है, सब अडॉप्ट करने लगेंगे। By this way, we can easily protect indigenous culture and knowledge. The tribal are renowned as a political capitalists who raise a large scale goods and proceed for trading monopolize of the merchants effect to tribal life. To cross such monopoly, the government introduced purchase, sell, and fair price substitute. It was 1964, पहले ही मैं बोल चुका था, 1964 को एक स्कीम आया था जिसके तहत सीधे तौर पर आदिवासी लोग का जो प्रोडक्ट होता है और इसके हिसाब से जो इस्तेमाल करते हैं खेती में वो मिल जाता था और वो खुद आ जाते हैं। जो अभी इंट्रोड्यूस है धान के लिए मंडी चाहिए, तो इसी तरफ वो था, लेकिन वो क्या हुआ, partially benefited the tribal, but after that the become scheme was abolished. The tribal was donors from the trading group are not the specialized trade and commerce. The major portion of the tribal sellable commodities is taken from by the so-called merchant business. So it is in serious issue for their economical development. Religious aspect on the basically the use Raigada Koraput. थोड़ा डिफरेंस है कलाहांडी के जो आदिवासी उसकी तरफ से कलाहांडी के आदिवासी रहते हैं, उसका चाल, उसका रिलीजियस और उसका उसके साथ मिलता नहीं, तभी वो रिश्ता बनाते नहीं। एक आप मान लीजिए कि एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा अंचल है, लेकिन वो जो ग्रुप संत टाइप के ग्रुप और वो जो है वहाँ का जो 4 डिस्ट्रिक्ट में जिन ग्रुप है, किसी के साथ किसी से मिलता नहीं, तो इसी के साथ देयर रिलीजन कंसिस्ट ऑफ रेगुलर propitiations of God, spirits, and means performance of rituals. Especially, tribal are enemies, polytheists, and conceived of the large pantheon of supernatural beings that control their whole life. Religion has two interrelated constituents. तो इनमें हम बोलेंगे तो रिलीजियस क्या है, उनका जो है ब्लाइंड फेथ यहाँ हम बोल सकते हैं, जो तो हम जो उधर सिटी में रहने वाला या कोई अंचल साधारण प्लेस में रहने वाला लोग ब्लाइंड फेथ बोलते हैं। तो ये ब्लाइंड फेथ क्या है, तो ब्लाइंड फेथ इसीलिए मैं कंडेम कर रहा हूँ, जो
belief is the made of the conception and ritual is the made of action. So ये दो तरह का रहते हैं. So their कल्चर है, उसका कल्चर के हिसाब से एडप्शन उसका करना चाहिए. हम जो साधारण लोग हैं जो बसवास करते हैं उसी तरफ करना चाहिए, और उसके तरफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट को भी उसका उसको हेल्प करना चाहिए कि ताकि वो अपनी कल्चर को, और वो तो अपनी कल्चर नहीं, वो तो हमारे इंडियन कल्चर है, उसको कैसे हम बचा सकें और उसको कैसे हम ज्यादातर यूज कर सकें. There are ideology scientifically more rational. For example, they adore trees, stone, जो नेचुरल रिसोर्स को वो मानते हैं ये हमारा देवी देवता है, वो जो है उसका साइंस के हिसाब से हम सब लोग कभी साइंस के ओर से चल रहे हैं. तो इसी के हिसाब से देखो तो ट्रीज को क्यों पूजा करते हैं और स्टोन को क्यों पूजा करते हैं, अर्थ को माता बुला के क्यों, पहले ही वो आदिवासी थे जो करते थे. मेजिकली रिलीजियस ह्यूमन सर्वाइवल. तो एक क्या कहते हैं जो हम साइंटिफिकली भी देखें तो उनके हिसाब से नहीं, हम सभी लोगों के हिसाब से ही वो हमारे फलदायक है, और हमको उसी के वजह से हम to hear and to learn to move anywhere. Actually, the tribal do not know science, but they conscious of the future generation regarding natural resources. Another thing is that their work is different from the others. क्या कि पहले वो तो जानते नहीं क्या है वो साइंस क्या है, लेकिन उस इसी के ऊपर 1980 में एक बुक पब्लिश हुआ था, जर्मन के राइटर शायद वो स्कुमाचर स्मॉल इज ब्यूटीफुल लिखे थे, और उनको पूछा गया कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो आज के सब जो पृथ्वी के सभी लोग, यूनिवर्स के सभी लोग वो मानने लगे. तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या था, जो छोटा परिवार को उसी के हिसाब से नहीं लिखा गया. तो उसे क्या लगा, बेस करके ट्राइबल कल्चर को बेस करके वो कितने अपने हिसाब से कितने कॉन्फिडेंस है और कंजर्वेटर है, अपनी सर्कमस्टेंसेस से जो है वातावरण में जो है उसके हिसाब से कैसे कंजर्व करते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन. हम क्या करते हैं उससे जो वो एक शब्द लिखे थे वो सुमाचर ने, तासी के रूप में, हम जो हिंदी में बोले तो तासी के रूप हिसाब से हम क्या करते हैं नेचर को यूज करते हैं. यूज करना हम यूज आदिवासी यूज नहीं करते, आदिवासी उससे बचाते हर फ्यूचर जनरेशन. तो हम यूज का करा, तो इसीलिए सुमाचर का जो 600 पेजेस था उसका, मैं जब पीएचडी रिसर्च कर रहा था उनका पाया था बुक किताब में वो जो मिला था. देन आई बिलीव फॉर द प्रोटेक्शन इन सम स्टेप्स, हमारे तरह जो है कुछ स्टेप लेना चाहिए. और तो पहला स्कूल आर encouragement to set up tribal club with students belong they are taught and culture of language of tribe. सर मेंशन किए थे पहले, जो लैंग्वेज में नहीं है, अपनी खुद का लैंग्वेज में नहीं हो तो वो आसान से समझना, वो अपनी थॉट को अपनी को ज्यादातर से एक्सपोज करना, वो एक्सपोज नहीं हो पाए. तो इसी के हिसाब से होना चाहिए स्कूल. हम जिस जगह गए थे कलाहंडी में, तो कलाहंडी का बिलोंग करता हूँ, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी. लास्ट इस दिसंबर को गए थे. 5 गांव में एक स्कूल था, और स्कूल में 5 गांव में एक स्कूल, वो बच्चे हैं या नहीं है वो तो दूसरी बात है, अलग सा बात. लेकिन एक गांव में भी स्टूडेंट्स आता है तो वहाँ स्कूल होना चाहिए. तो ये हमारा जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जहाँ पर स्टूडेंट नहीं जाता है, क्यों वहाँ उनको तनख्वाह देंगे, उनके हिसाब से गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, वो समझना. तो क्या होता है उससे एक स्टूडेंट भी आ जाए ना, उसके हिसाब से
वो अच्छा रहता, अच्छा रहेगा। तो ये जो वेलफेयर स्टेट में वो एक स्टूडेंट में कितना टीचर है उसके हिसाब से कोई गवर्नमेंट हिसाब कर लेता है, कोई गवर्नमेंट देख लेता है, और करने से नहीं है। तो और फिर दूसरा बात है, तो हमारा जो टीवी रेडियो स्टेशन आर मैंडेट टू इंश्योर दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर प्रोग्राम्स टू promote the culture, image, expression of nations. The number of performance म्यूजिशियन एसोसिएशन, जो हमारा म्यूजिशियन एसोसिएशन भी है, और उनको कंपल करना चाहिए गवर्नमेंट, और उनको भी जो किसी के भाषा में, वो लैंग्वेज में, उनका स्वर में, वो खुद कविता लिखे, वो कुछ कहानियां, कुछ गीत लिखे, और से ज्यादा एक्सपेंड करें। हम वो गीत के चले गए उससे, तो वो क्या है, तो रामचंद्र, वो पहले हम बोलते थे वेस्टर्न नेशन, वो पहले में आदिवासी के कल्चर, उसी तरह ये पाया पहले यहाँ हमको दृष्टि में नहीं आया, हमारे दृष्टि में वो इस तरह का वो तो से चलना चाहिए। म्यूजिशियन आर्टिस्ट सभी को, और मिलके तो ज्यादातर से बोलता हूँ, और सर्विस सर्वेंट गवर्नमेंट रखे हैं, TW, SDW, वेलफेयर एक्सटेंशन, तो क्या करते हैं ऑफिस में बैठते हैं और बुलाते हैं। मुझे मैं भी क्या करते हैं, जाके कोई लिखे प्रॉब्लम क्या है, इट इज फॉर डेवलपमेंट और एनहांसिंग our it is हम प्रोटेक्शन के तहत कुछ आ जाए इसी को। Sorry for the interruption, Dr. Parikshit. जी क्या बोल, Sorry for the interruption, because your time is almost over, so you can conclude by another 2 minutes so that we can have a discussion. And, मैं तो क्या yeah, है, please. तो इस हिसाब से एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट कंजर्वेशन टू प्रोटेक्ट फूड एंड पॉल्यूशन हो सकता है। कभी कभी सोचता है फॉरेस्ट को also one of the economic one culture कैसे livestock all this, and really now time will be yes. As per my knowledge is concerned, basically, the tribal and Malkandiri in Odisha are more than in these conditions may whole or despite all efforts in development program, the state has to reduce the disparity between the tribal and non-tribal. That whereas as value of tribal districts is more non-tribal tribal district क्या समस्या है जो है नॉन ट्राइबल में ट्राइबल रहते हैं उनका समस्या ज्यादा होता है, नॉन ज्यादा जो ट्राइबल को मिलेगा, ट्राइबल को था और ट्राइबल मिलना चाहिए, नॉन ट्राइबल हैंडल कर लेते हैं। तो ये एक समस्या है, तो ट्राइबल विलेज का एक समस्या है, ट्राइबल के बीच में ट्राइबल आ जाता है, ऐसे ही गाँव है हमारा इंडिया में, तो उस से हमको देखना चाहिए इंडिविजुअल मतलब ये गोष्ठी के
वहाँ कितने हैं और से वो कितना even all its components indicate like income, value, uh, higher than non-local of the state. In this situation, going to their indigenous knowledge and culture, external influence are anyway. It is highly difficult for the administration to find out further participation in the education's various forms of development programs and promote the technology should improve reduce activity mean planning and implication. तो जो शब्द हम प्लानिंग इम्प्लीकेशन में कोई समझता है क्या क्या इम्प्लीमेंट वो जो हिसाब से हो रहा है बस बात ये नहीं हमारा जो ऑफिस में है ऑफिस में रह जाता है जो रहता है और तो इसी के हिसाब से प्लानिंग और इम्प्लीमेंट डायरेक्ट होना चाहिए इसी की वजह से वो ट्राइबल लोग गेट मोर प्रॉफिट फ्रॉम government. Thus, it is awkward that in culture is integral part of society. Today, I will present that one of my chapters. So, uh, I, I think कुछ मैं आपको इसी तरह आप मुझे दिए हो to coordinate to arrange meeting government and you also sir and Rajkishore sir participant. Thank you so much. Thank you, Dr. Parikit Bhoi, for your enlightened talk on the interference of external factor for the development of travels and how to overcome it. So we come to an end of this beautiful session, and I request all the PIs who are actually watching this through YouTube, if you are having any question, then certainly you are requested to put the question in in the in the Regional Coordinating Institute, National Institute of Technology for any queries, so that we can transfer that question subsequently to the speaker and you can get the answer. To summarize the entire session, the first speaker so nicely described about the beginning of the Santal culture, Santal custom and all that, and how it is being followed, how they follow the nature, and according to the guidance of the nature, they actually live in harmony with the nature, and there is no problem. But now, because of the different development work or different scenario, little bit of interference is there, and how to overcome specific solution is also given. The second speaker actually, Mr. Mr. Sanatan Maji Murmu, he also explained the cultural, then economical, and the harmony of nature, how that is actually being the guiding principle of the tribal in villages, and how it can be improved upon. They have given a lot of example, a lot of points under which if it will be implemented, then or it will be actually taken care of, then this development of tribal people will be enhanced. And the third speaker, Dr. Parikit Bhoi,
he also explained nicely the livelihood of tribals in villages, how they are making their livelihood by taking the principle of nature, and because of that, when it is in the developmental stage, there is a interference, and the outside interference is trying to exploit the tribals, and how to overcome that. He has explained it very nicely. Now I request all the speaker, because that we have you have presented nicely so many points, but I will request all the speaker to summarize what are the three important problems or three important interference which is trying to enter to the life of tribals and villages, and their probable solution. Only three probable problem or interference, and how they can be overcome. And that is the reason why Ministry of Education through National Coordinating Institute, IIT Delhi, they have given the opportunity through UBA program uh, to actually formulate, because everything government cannot do. It is not possible also. So they have given the responsibility to actually Ministry of Education, IIT Delhi, and through the Regional Coordinating Institute and PIs and the speaker today. So you please suggest how to improve it, how to improve if there is a interference for the actually tribal life, and how to improve it. So I suggest again, or I request all the speakers, at least if you can write to us or to IIT Delhi, then in a proper format it can be presented. Now, with my concluding remark, actually, the changes are always inevitable. Without the changes is a natural process. All the time the changes happens. It is a natural process. It is always a natural process. And I believe in this process, there are many things which can be taken up, but in my opinion, there is only one of the most important problem for which these things are happening. And the problem is that old habit and new technology, somehow they are not matching. So if we can do something through this type of webinar, through some specific program, through some solution, then the gap between the old habit and new technology will be shortened. And definitely by keeping the culture, by keeping the tradition, by keeping the integrity of the tribal people who are living in the villages, in forest, it can be improved without compromising uh, their their standard of living, their culture, their everything. And in this respect, once again, I thank all the speakers, Dr. Dr. Jitendra Nath Besra, Sandra Maji Murmu, and Dr. Parikit Bhoi for their speech. And in future, I believe we can have more such type of webinar or physical meeting where we can discuss more on this topic. And I also thank IIT Delhi, Professor National Coordinating Institute, Professor Vijay, for making the arrangement for such type of webinar. And especially I wish to thank Mr. Chakrabhushan Pandey, Ms. Sneha, for helping in the organization and helping the organization to conduct such type of webinar. So thank you once again to one and all. Thank you, Mr. Chakrabhushan Yes, thank Pandey. you, sir. Thank you, sir. So one question is from Dr. Jatin Nath, sir.
Sir, what is the effect of bauxite mining on tribal health in Kalahandi and Raigad districts, sir, please? Yeah, Sir, you sir, know, yeah, bauxite sir. mining, there are various aspects, but I will limit it to 2-3 points. First thing is that when the bauxite are present much below the level of height, so it is in that area. So when there will be excavation of the ores, definitely the forest will be to some extent it will be affected. Second thing is that the process of uh, converting bauxite into aluminum oxide, which is subsequently used for for extraction of aluminum metal. During that process, actually it is a lengthy process, and there is a huge amount of red mud generated. What is being done is that bauxite is taken with aluminum oxide Al2O3, 2 molecule of water. It contains amount of oxide and more amount of non-bauxite uh, minerals. So to extract that, sodium hydroxide in a huge concentration, sodium hydroxide, which is very, very alkaline, it is put in that, and under certain condition, temperature and pressure, it will be boiled so that the aluminum oxide is converted into sodium meta-aluminate, which is soluble in water. And as because it is soluble in water and all the rest, whatever is present, they are not soluble, they can be separated. After separation of aluminum oxide, the whatever is left out, that is called red mud, and it is a highly alkaline waste, which is called a highly alkaline waste. And disposal of such a huge amount, because 1 ton of aluminum extraction, actually it generates 1.25 to 2.5 ton of red mud, which is very, very alkaline. And the management of this red mud is a difficult task, and there is a red mud pond, and all sorts of problem is there for the management. Of course, there are some technology developed and developing to manage all this. Then the aluminum oxide is in very fine form, very, very powder form, and it will be transported from the place where it is actually benefited, means the concentration of aluminum oxide or aluminum oxide is generated, to the place or to the plant where it is get electrolyzed to produce the aluminum metal. So because of this, the underground water is polluted. If it will be dry and there will be wind, then the environment nearby Okay. problem, and that can be discussed actually because it takes long time for discussion. However, I can certainly tell what are the basic problem and what are the probable solution of this bauxite mining in Koraput district and Kalahandi district subsequently. थैंक यू सर। और डॉक्टर जतिंद्र सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2013 में जो हुई थी कि जब भी नए माइंस का वहां पे स्थापना होगा तो ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही होगा, तो क्या उस आदेश का पालन किया जा रहा है? हाँ सर, अभी वो माइनिंग बंद है, अभी खोला नहीं गया है अभी तक, जितना जी। मैं सुना हूँ। जी जी, इतना ही। इसीलिए अभी कहा गया है कि जितना भी गांव में या जनजातीय क्षेत्र में जितना भी काम होगा, पहले वो ग्राम सभा में पारित होगा, इसके बाद फिर सरकार को जाएगा। थैंक यू सर। तो एक क्वेश्चन श्री सनातन मांझी सर से है कि सर जो पीबीटीजी हैं, इनके लाइवलीहुड इनहेंसमेंट के लिए कुछ सजेशन है तो आप बताएंगे सर प्लीज? तो या सर लाइवलीहुड और हेल्थ इंप्रूवमेंट दोनों के लिए कुछ आपका सजेशन है तो सर एक बार प्लीज। इसका लाइवलीहुड जंगल में ही है, फॉरेस्ट में, ज्यादा फॉरेस्ट गेदर, और फॉरेस्ट से वो जितना भी प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट, वो फॉर गैदरिंग कर रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं, और इसका कोई जमीन नहीं है
ये के लिए कल्टीवेशन के लिए इसका जमीन नहीं है, ओनली द फॉरेस्ट। उसको फॉरेस्ट में इसको फॉरेस्ट में इसका लाइवलीहुड है, इसीलिए फॉरेस्ट ही, फॉरेस्ट का वो भी हिफाजत कर रहे हैं, फॉरेस्ट का भी। और only forest is their livelihood and only forest is their savior. That is the thing. Okay, thank you, sir. So thank you, Professor Rajkishore, sir. We appreciate your efforts you are doing for Unnat Bharat Abhiyan as a regional coordinator for Odisha. Today we saw your wonderful moderator. So thank you, sir. And many thanks to all the speakers, distinguished speakers, for enlightening us with ground reality and amazing talk. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you.